I audible to you now? आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है? Is that clear? Fine. So sorry for the technical issues. So good morning, good evening, everyone, and welcome to today's Unacademy session. I'm Lakshmi Kushwaha, your educator for Code 55 on Unacademy platform. Welcome to Unacademy's YouTube channel and welcome to today's session. Today we are going to do very important topic, that is your evolution of trade unionism part 1. We are going to do in the part 2, two parts. How trade unionism or trade union came into the existence in India, how the trade unionism have grown in India, that is what the evolution is. So meanwhile others are joining, let me introduce myself. I am Lakshmi Kushwaha, verified educator on Unacademy, where I teach subject code 55, that is your industrial relations and human resource management. Do follow me if you're preparing for code 55 NTA NET in labor law, labor legislation or human resource management, PhD entrance, PSU exam or any such other exam which is having human resource management, labor law as a subject. And even if you are from the background which is in commerce or the management, and if you're looking forward for HR topics, you can follow my courses, my classes related to human resource management on the Plus platform, right? So now other than this, you are aware that we have iconic platform or Plus classes and iconic classes which provides you personal guidance, study planner, test analysis, expert guidelines and structured unlimited classes. This is for the iconic. There is a separate Plus as well. You can get the benefits of both Plus and iconic. These are the benefits for the Plus. These are the iconic benefit. You all are aware. You can use the code Lakshmi K Live and enroll yourself to the Plus classes. And right now, currently, the current complete course for the code 55 is going on. Then if you're preparing for PhD or PSU, you can follow the same courses, right? Other than this, a very new event which is going to happen on 5th of September, Teachers Day. Teachers Day is being auspicious occasion for all the teachers and even for me. But this time there is something very new which is going to be released by Unacademy. So I want you, every one of you, to join the description, the link given in the description on 5th September 2022, 6 p.m. onward. And there is very something new. A revolutionary new learnings are going to happen and revolutionary things are going to happen. So don't miss the chance and do tune in at 6 p.m. on Unacademy's live channel, and it would be, the link is given in the description. Fine. So that was all about trade. This was all about children. Am I audible? Let me know if I'm audible. Done. So we'll start the evolution of trade unionism. Okay. Now, before we start actual evolution of trade unionism, there is certain concept, there are certain things, there are certain terms that you need to be aware of. First thing, what do you mean by trade union? Why actually the trade union are formed?
reason for formation. Then there are some background, how you are going to actually learn the evolution of trade union. So this is going to be a story kind of thing with an concept, with the detailed and bullet points. So this is an background which you have to understand. With this help of this story background, you will be able to learn all the years in the trade union. Other than this, there are certain terms like moderate. We will be studying moderate leader. There wasn't split into the All India Trade Union Congress by moderator, by communist, radicals, capitalists. So these terms you need to understand. So we have moderate, then we have radical, then we have communist, then we have industrialist, fine. First and foremost, what do you mean by trade union? So trade union, when and why the trade union are formed? So trade union are the association or the organization of the workers coming together with an purpose of regulating their relationship with the employer. Specifically, the relationship between the employee and employer, trade workman and workman, or rather you can say workman and employer, workman and workman, and employer and employer, for what? Regulating the business, trade and business, and imposing the restrictive conditions on the business. मतलब ट्रेड यूनियन क्यों बनती है और ट्रेड यूनियन का मतलब क्या है? एसोसिएशन ऑफ द एम्प्लॉइज और द वर्कर. जब वर्कर्स एक साथ एसोसिएट होते हैं, दे कम टुगेदर टू कलेक्टिवली बार्गेन विद द एम्प्लॉयर, दे दैट इज कॉल्ड एज द ट्रेड यूनियन. अब ट्रेड यूनियन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा क्या हुआ कि ट्रेड यूनियन एसोसिएशन या वर्कर्स का ऑर्गेनाइजेशन करने की जरूरत पड़ी? ऐसा क्या था? So if we go back to 19th century, when there were number of industries, number of the factories going in India, these factories, this capitalism, this industrialization brought some evil effects also. This evil effects were from the side of the capitalist. Capitalist का मतलब होता है employer, one who holds the complete means of production. तो जो capitalist थे, जो employer थे, जो industrialist थे, with the increase in the factory, with the industrial number increasing, the evil effects of this industry also start increasing. The employer or the capitalist or the industrialist, they just wanted to gain the profit even at the cost of the employees' welfare. So they were not at all looking forward for providing welfare facilities to the employees. The situation in which these employees were working were pathetic. Not given the wages on time, the sweated industries, working for longer hours, difficult situation, dangerous situation, and so on. As a result of this, few of initially the philanthropists, मतलब ऐसे लोग जो mankind, humankind को लव करते हैं, उनके प्रति दया रखते हैं, ऐसे लोगों के मन में कुछ उनके लिए सहानुभूति जागी. तो ऐसे ग्रेट लीडर्स सामने आए, उन्होंने एसोसिएशन बनाने की कोशिश करी, जिसके थ्रू लाइक बीपी वाडिया, एनएम जोशी, एनएम लोखंडे, these are the few names who initially actually brought the workers together. वो फेज था जब इस एक्सप्लॉइटेटिव नेचर के अगेंस्ट खड़े होने के लिए एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स बनाया गया, और वो था हमारा ट्रेड यूनियन. तो ट्रेड यूनियंस बनाने के ओरिजिन ऑफ ट्रेड यूनियन के रीजंस आर, फर्स्ट, the difference between the capitalist and labor, means the capitalist, the employer were having their own power, they controlled the means of production and they exploited the labor, whereas the labor were the supply, they were making the supply of the labor but not getting the right wages. As a difference between them, the trade union was formed. Another, there was not much privatization, no government interference, तो अपने मर्जी से करते थे. This privatization, this laissez-faire nature brought more evil, more exploitation to the employees. इसकी वजह से भी ट्रेड यूनियन बने. तीसरी चीज, इंडिविजुअल डिस्पेंसिबिलिटी एंड कलेक्टिव इंडिस्पेंसिबिलिटी.
इसका मतलब जब एक अकेला एम्प्लॉय, व्हेन एन सिंगल एम्प्लॉय यूज्ड टू गो एंड टॉक टू द एम्प्लॉयर के आप हमें ये फैसिलिटी नहीं दे रहे, वी आर नॉट गेटिंग दिस वेजेस ऑन टाइम, the employer would say okay fine, if you're not getting the wages then go away, we don't want you. So it is easy for an employer to dispense or dismiss a single employee, get rid of single employee. But when the employees collectively come together, it's very difficult for an employer to make a decision to get rid of such number of the employees. This was also one of the reason why trade union associated or the unions associated together so that they can have some kind of bargaining power. Fourth reason why trade unions were or association of the workers formed was the bargaining power with the employees was lesser. Employees or the worker have been always depended upon the employer for their basic need, economic need, because of which they had little or no bargaining power. उनको पता था हमारी डिपेंडेंसी एम्प्लॉयर के पास है, अगर हमने आज कुछ कहा तो शायद हमारी वेजेस नहीं मिलेगी, हमारी नौकरी चली जाएगी, तो उनके अकेले के पास वो कलेक्ट बार्गेनिंग पावर नहीं थी। तो उस बार्गेनिंग पावर को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत सारे एम्प्लॉयज साथ में आए और एसोसिएशन या ट्रेड यूनियन फॉर्म किया। So these are the four reasons why trade unions are formed. अब जब हम बैकग्राउंड पढ़ेंगे, नाउ हिस्ट्री, इवोल्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म मींस फ्रॉम व्हाट, इनिशियली फ्रॉम वेयर द फर्स्ट ट्रेड यूनियन ग्रो, एंड अब जिस सिचुएशन में अब जो हमारे इंडिया में ट्रेड यूनियंस का फेस है, अब जो एग्जिस्टेंस है, अब जो पैटर्न है, वो इस पैटर्न तक कैसे आया। सो हाउ डिड इट रीच फ्रॉम zero or starting point till the point right now what it is existing in India. So the background is thoda sa I will give you the idea for this. See what happens when this exploitation happened, when this exploitation was happening. Initially there was no trade union, initially there was no trade union which was registered, or there was no such organization in a trade union format. Initially just an labor movement started. Now what do you mean by labor movement? जैसे आप नए हो, आप किसी सिस्टम में, आप कहीं पे, you all number of the people are together. तो क्या होता है, when you find something exploitative, when you find something disturbing, few people come forward and they start making a protest against that thing. उसके against जाने लगते हो, अपना protest दिखाते हो, तो वो एक अगेंस्ट या अपोजिशन का प्रोटेस्ट चालू होता है, अपोजिशन का मूवमेंट स्टार्ट होता है। वो वही हुआ इनिशियली स्टार्टिंग में, व्हेन द exploitative nature of the industries or exploitative nature of the factories was at high peak. Initially the philanthropist leaders, the leader who had love for the mankind like Robert Vavan, Mahatma Gandhi, S.S. Banerjee, they all came forward and they started the labor movement. They started showing the protest. As a result, the background start कि पहले कोई ट्रेड यूनियन नहीं था, पहले हमारा लेबर मूवमेंट ही स्टार्ट हुआ, and labor movement is known to be started by N.M. Lokhande by the formation of Bombay Handsmill Association. So N.M. Lokhande is known as father of labor movement in India. I will write it down the points, but remember. फिर उसके बाद में धीरे धीरे जब ये मूवमेंट स्टार्ट होता है तो एम्प्लॉयज और साथ में आने लगे, वर्कर्स साथ में आने लगे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एसोसिएशन फॉर्म करें, एक ट्रेड यूनियन फॉर्म करें जो एक्चुअली हमको रिप्रेजेंटेशन देगा। तो उसके बाद वो मूवमेंट ट्रेड यूनियन में कन्वर्ट हुई। तो इट वाज मद्रास लेबर यूनियन इन 1918 बाय द अंडर द लीडरशिप ऑफ बीपी वादिया, जब पहली बार एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन बनी गई। So it was BP Wadia when the first registered trade union came into the existence. And ऐसे करके number of, अब trade union existence में आई, number of trade unions were formed. When number of trade unions were formed, they started uniting as a federation. तो बहुत सारे ट्रेड यूनियन ने डिसाइड किया कि हम इंटरनेशनल लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी यूनाइट करेंगे टू रिप्रेजेंट एम्प्लॉयज व्यू पॉइंट ऑन द इंटरनेशनल लेवल। तो बड़ी बड़ी फेडरेशन लाइक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जैसी फेडरेशन बनी। वी हैव 12 सेंट्रल फेडरेशन, हम ऑल डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनी, इसके अंदर में 64 ट्रेड यूनियंस आए और उन्होंने फेडरेशन बनाया। व्हाट डू यू मीन बाय फेडरेशन? सी, ट्रेड यूनियन इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्कर्स,
फेडरेशन इज ट्रेड यूनियन, नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस कमिंग टुगेदर इज फेडरेशन। तो हिस्ट्री में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी अंडर द लीडरशिप ऑफ लाला लजपत राय। इसके बाद एक बड़े से ग्रुप में जिसमें 64 ट्रेड यूनियन एसोसिएटेड हैं, एफिलिएटेड हैं, they also started having some kind of conflict। उनकी भी सोच में सबका काम करने का तरीका अलग था। तो there happened a split। अब इसके अंदर स्प्लिट होना शुरू हुआ। सम जैसे कोई भी एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जैसे आपका खुद आप एक ग्रुप हो, एज एन स्टूडेंट्स का ग्रुप हो, आप किसी चीज को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हो, अचानक से आपके ग्रुप में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिन्हें आपकी पॉइंट ऑफ व्यू समझ में नहीं आ रही है, तो दे से नो नो वी डोंट वांट टू बी विथ यू, हम अपना अलग ग्रुप बनाएंगे। तो वो जो अलग ग्रुप बनाया वही ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में हुआ स्प्लिटिंग के बाद वर्ल्ड वॉर हुआ। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर द इकोनॉमिक सिचुएशन वाज बैड and the growth of the trade union started falling down. As the growth of trade union started falling down, the trade union realized that in this condition of low or the Great Depression period या bad economic situation, it's very important to unite together। फिर उनमें यूनिफिकेशन हुआ। तो ये सारी बैकग्राउंड, ये सारा चीज ही हमारा इवोल्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियन है जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट आई हैव गिव यू। नाउ गिव मी an idea, give me thumbs up if you have understood। This is not the 3-hour session, we'll take it in 2 parts। Mansi, okay, good evening essay, if you have understood do give me the thumbs up if you have got the idea what I have taught। अभी जो मैंने बताया आपको, अगर वो चीज समझ में आ गई है मुझे thumbs up या कमेंट सेक्शन में आप, फिर मैं आपको इन टर्म्स का मतलब समझाऊंगी। चलो क्विकली, okay fine। Now we have few terms: moderator, radical, communist and industrial। Who are moderators? Okay, who are radicals? Who are communist? कौन से लीडर, किन्हें हम कहते हैं ये मॉडरेट लीडर्स हैं, ये कम्युनिस्ट लीडर हैं, ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये मॉडरेट लीडर। फर्स्ट थिंग, industrialists are the one who hold complete power, who hold complete means of production। उनके पास पावर होता है, पैसा होता है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। they are called as the industrialist। जिनके पास में सिस्टम है, मशीनरी है, पैसा है, जो एम्प्लॉय को खरीद सकते हैं, लेबर को खरीद सकते हैं, उन्हें हम इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं। अब I told you that All India Trade Union Congress, this was formed federation, there was the formation of various trade union by various leader। इन लीडर्स को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, या डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लीडर्स होते हैं। few leaders are called as the moderator, some are called as the communist and few are the radicals। अब moderators का मतलब क्या होता है? When this trade union movement started, this was actually under the British government। So moderators are the leader, ऐसे leader who wanted to go against British but in peaceful way। क्या चाहते थे कि वी वांट, मॉडरेटर का कहना था, मॉडरेटर जो लीडर होते थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएंगे, वो उनके खिलाफ जाएंगे, उनके अगेंस्ट एक्शंस लेंगे, बट पीसफुल वे में, मार काट करके नहीं, लड़ झगड़ के नहीं, पीसफुल वे में। जो चीज गलत है उसके अगेंस्ट धरना देंगे या पीसफुल वे में कहेंगे। they are the moderators। so moderators are the leaders, or they were the leader who went against the Britishers in an peaceful way। radicals, these were the leaders who went against the British in a violent way। strike, lockout, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, विद्रोह करेंगे। so they are radicalists। who are communist? communist are the one leader who believe in dividing the society into classes। as the name suggests, community, वो क्या करते हैं? क्लास ऑफ द सोसाइटी या इंडस्ट्री को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं।
they clearly picturize this thing saying that you are capitalist, we are the labor. आप कैपिटलिस्ट हो, आपके पास में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, आप पैसा, आपके पास प्रोडक्शन है, हम लेबर है. तो दे डिवाइड द क्लासेस, कम्युनिटी में डिवाइड करेंगे सोसाइटी को, एंड they run the society by giving the power to the public or the laborers या employee. और यहाँ पे इस सोसाइटी को रन करने की पावर किसके पास होगी? पब्लिक, लेबर या फिर वर्कर. सो पहले तो क्लासेस में डिवाइड किया, क्लासेस में डिवाइड करने के बाद में उस सोसाइटी, उस इंडस्ट्री को रन करने की पावर भी वो पब्लिक के हाथ में देना चाहते हैं. दे आर कॉल्ड एज कम्युनिस्ट. ठीक है, वो कम्युनिस्ट कहलाते हैं. If you have understood, do let me know, because in next आगे आने वाले टॉपिक्स में या आगे आने वाले स्लाइड्स में हमें इन लीडर्स के बारे में पढ़ना है. ठीक है, चलो, let me know if this is clear. Now, the evolution of trade union in India can be divided into different phases. 6 phases. How many? Either you can call them as the phases, 6 phases, or stages. Right? 6 phases or 6 stages. We will be studying them one by one in detail, and if you are making your notes, you can write it down. So I will first write down the 6 stages, and again I will give little bit idea about it. So the first one is your the 1918. This phase is called as the genesis, Gene, genesis, or you can say the starting of labor movement in India. Then we have from 1918 till 1924. This is called as the early trade union phase. Then you have third, 1925 to 1934. Somewhere 35 भी लिखा हुआ है, 34. This is the period of left wing influence. Okay. Then we have 1935 to 1938. This is the Congress Integrum INREG. Then fifth phase is your 1949 till 46. That is pre-independence. So that is period of labor activism. Sixth phase is 19 after independence till date present. That is your post independence trade unionism. Fine. So these are the 6 phases, or these are the 6 stages of the evolution of trade union in India. Pre 1918, 1918 के जितने भी हम लोग पढ़ेंगे, 1918 के जितना भी टाइम पीरियड था, that time period was a labor movement. इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में या इस स्टेज में कोई प्रॉपर ट्रेड यूनियन एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, ट्रेड यूनियन थी ही नहीं. वहां पे इस फेज में केवल या तो एसोसिएशन था या तो ऑर्गेनाइजेशन था. वहां ट्रेड यूनियन, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन एग्जिस्ट ही नहीं करती थी. इट वाज जस्ट एन लेबर मूवमेंट व्हिच स्टार्टेड इन इंडिया.
हम इसके कैरेक्टरिस्टिक, आई विल राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन आता है. मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेते हैं, सो ऑन. देन in 1918 to 24, this was, so 1918 was the first when the Madras Labor Union registered trade union was formed. तो ये ऐसा era था या ये ऐसा phase था where their number of the trade unions framed, the trade unions began to form, and almost in every industry there was trade union. Then came 25 and 34. This is known as the left wing influence. This is the era, or this is the time period when the Federation, All India Trade Union Congress and other such big federation saw the split. अलग अलग होने लगे लोग. फेडरेशन से लोगों ने अपने अपने लीडर्स ने अलग अलग पर्सपेक्टिव की वजह से अलग अलग अपने छोटे छोटे ट्रेड यूनियन बनाए. फिर उसके बाद 35 to 38 द कांग्रेस इंटीरियम, इंडियन नेशनल कांग्रेस का मेजर रोल था यहाँ पे और मेजर कंट्रोल था. दिस वाज द यूनिफिकेशन पीरियड. दिस वाज द टाइम पीरियड व्हेन अगेन दो स्प्लिटेड ट्रेड यूनियंस फ्रॉम द All India Trade Union Federation came back and reunited with the All India Trade Union Trade Union Congress. Period of labor activism 39 to 46. This is the phase when labor or the laborers or the workers in India became more aware of their rights. वो more activism हो गए, वो aware हो गए कि हमारे क्या rights हैं. उसके बाद में laws, rules, regulations, ये सारी चीजें existence में आने लगी. देन 1947 के बाद में अभी तक की जो हमारी सिचुएशन है, ये सारी चीजें, बहुत सारे टाइप ऑफ फेडरेशन है, ट्रेड यूनियन है, जो चीज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. इफ यू हैव अंडरस्टूड, राइट इन द कमेंट सेक्शन यस. आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेज नाउ. So the first was the 1918, that is your the starting or genesis of labor movement in India. Okay. Now I will write the characteristics or the features of this which are important. Okay, features, और मैं आपको explain करूंगी, don't worry. Features of this phase. First one, the movement was led by social reformers, philanthropists, and not by workers. There existed no trade union, no registered, no official trade union existed. Okay. Two sense. का मतलब क्या है मैं आपको बताऊंगी. This characteristics are important. Labor movement was for the workers rather than by the worker. Okay. Or fourth point is movement was to protest against working conditions, especially for children and women. अब इसको समझते हैं. So 1918, before 1918 it was in genesis of labor movement in India. मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा हिस्ट्री बताया that
इनिशियली इन द 19th सेंचुरी, तो 1918 का जो पहले का टाइम पीरियड था 19th सेंचुरी, व्हेन देयर वर नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, नंबर ऑफ द फैक्ट्रीज इन इंडिया, so exploitation was also there. As an exploitation, seeing this exploitation, employees या workers के पास तो वो bargaining power थी नहीं, so that exploitation was so high, the workers were working in pathetic working conditions, they were not given the salaries, wages on time, they were not given safety measure. Seeing this, some of the social reforms, philanthropists, social reformers, Robert Bevan, जो सोसाइटी के लिए भला करने की बात करते हैं, philanthropist, one who is having love for mankind, ऐसे लोग सामने आए और उन्होंने एक लेबर मूवमेंट स्टार्ट किया अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो यहाँ पे कोई भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन एग्जिस्ट करती नहीं थी. दैट वाज ओनली एन मूवमेंट, लेबर मूवमेंट. लेबर मूवमेंट स्टार्टेड, एक मूवमेंट स्टार्ट हुई लेबर्स के अंदर में टू गो अगेंस्ट द रूलर, अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. देन the labor movement here which was started was for the worker, यानी जो movement थी वो workers के लिए start हुई थी, but workers ने नहीं करी थी. It was started by the social reformers and philanthropists. ठीक है, so it was a phase when the movement was for the workers rather than worker, and specifically here concentration was to focus on child and the women labor. तो अब ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट आने वाले स्लाइड में अभी आपको समझाऊंगी कि ये सारी चीजें कैसे सच हैं या क्या क्या ऐसा हुआ था कि जो चीज इसी पे, ये पॉइंट्स इसके कुछ कैसे जस्टिफाई करते हैं. इफ यू हैव अंडरस्टूड, मार्क इन द कमेंट सेक्शन. नाउ लेट मी स्टार्ट. इनिशियली, सबसे पहले इस फेज में आपको क्या क्या याद रखना है या इस फेज में क्या क्या चीजें हुई थी. सो इन इंडिया इट वॉज, अगेन कॉजेस मैंने आपको बता दिए. क्यों ये लेबर मूवमेंट स्टार्ट हुआ? बिकॉज कंडीशन सही नहीं थी, वेजेस टाइम पे नहीं मिलते थे, they were made to work for long hours without the proper wages. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, प्राइजेस, असेंशियल कमोडिटीज के प्राइजेस हाई थे, एम्प्लॉयज एफोर्ड ही नहीं कर पाते थे. तो एज अ रिजल्ट ट्रेड यूनियन मूवमेंट या लेबर मूवमेंट स्टार्ट हुआ. सो इट वॉज इन 1851. मैं जो जो टर्म्स लिख रही हूं आपको ध्यान में रखने हैं. द कॉटन मिल was started in Calcutta. Then 1855, jute mill that was started in ये दो मिल 1851 में, it was the cotton mill which initiated which mill. तो हमारा जो एक्चुअली रेवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ था, लेबर मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ही स्टार्ट हुआ था. जूट इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ही स्टार्ट हुआ था. तो इन 1851 द कॉटन मिल वाज formed or was constructed or was came into the existence in Calcutta. In 1855, jute mill in Bombay. There was an pathetic situation as a result of those unhealthy conditions, those pathetic situation, and leader known as S.S. Bengali. Who? S.S. Bengali. He formed the first labor association, yeah, first labor organization that was working men's club. 1955, 1971, S.S. Bengali ने 18, sorry, I'm saying it as 19, it's 1851, 1855, and it was in 1870 that this labor organization was formed by S.S. Bengali. Now, during this phase, 1970 में, the first labor agitation happened in 1875.
कब? 1875 में, अंडर द लीडरशिप ऑफ SS बंगाल। ठीक है, क्या हुआ? पहले क्या फॉर्म हुआ आपको याद रखना है, 1851 में कॉटन मिल, 1855 में जूट मिल, फिर ये सारे मिल्स में, ये सारी फैक्ट्रीज में एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। एज एन एक्सप्लॉइटेशन टू गो अगेंस्ट, इट वाज द फर्स्ट लीडर SS बंगाली who framed a labor organization named as Working Men's Club, and it was in 1870 and it was in 1875 when SS Bengali, in his leadership, the first labor agitation yani first labor movement started against the rule. So it was 1875 when the first labor movement started. The basic objective of this labor movement to bring into the notice the pathetic condition of women and the children. As a result of this labor agitation, the 1875 first factories commission was formed. The first factories commission was formed in 1875. This commission analyze the situation of different factories, analyze the situation of the workers, analyze the situation of women and children, and as a result of this first factories commission, the first Factories Act 1881 was formed or came into the existence. क्या हुआ? जूट मिल इन कैलकाटा, कॉटन मिल इन बॉम्बे, कॉटन मिल इन Shreya. What are you saying? Jute mill in Calcutta and cotton mill in Bombay. Is it? No, cotton mill in Calcutta, jute mill in Bombay. Yeah, this is in Calcutta, this is in Bombay. Yeah. Fine. अब 1875 के अंदर में, is this clear? First फैक्ट्रीज कमीशन बना। फर्स्ट फैक्ट्रीज कमीशन बनने के बाद में द फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट 1881 केम इनटू द एग्जिस्टेंस। देन 1877 में अंडर द, so in 1877 there was a series of strikes which happened in Nagpur Empress Mill Mall, Empress Mill, नागपुर। ये पहला था जब 1877 के अंदर में जब स्ट्राइक्स हुई, सीरीज ऑफ द स्ट्राइक्स हुई, रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू वेजेस। ऑलरेडी द फैक्ट्रीज एक्ट केम इनटू द एग्जिस्टेंस 1881 में, लेकिन 1877 में देयर वाज मोर नंबर ऑफ द स्ट्राइक व्हिच हैपेंड एट एम्प्रेस मिल नागपुर। ठीक है, ये याद रखना है आपको। There were over 25 strikes which happened, and the strikes were related to the wages. They were related to the wages. अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? 1877 का रिजल्ट क्या हुआ? इससे क्या चीजें बनी? इसके बाद में अगेन in 1885, which 1885 second factories commission was formed. This commission was actually the result of those strike. वो जो strike चल रहे थे उनकी वजह से और भी चीजें थी, जैसे especially to amend the Factories Act of 1881. So the first reason was strikes which happened at Empress Mill. Okay. दूसरा रीजन था the amendment in Factories Act. उसमें अमेंडमेंट लाने के लिए 1881 के लॉ में अमेंडमेंट लाने के लिए ये पर्टिकुलर कमीशन बिठाई गई। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कमीशन, the second or the factories
1891 was passed. फिर ये वाला लॉ एग्जिस्टेंस में आया. ठीक है. सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन. धीरे धीरे चीजें बढ़ रही हैं. अमेंडमेंट हुआ. दिस अमेंडमेंट एक्चुअली प्रोवाइडेड फॉर वैलिड वेजेस वर्किंग कंडीशंस. इसमें चीजें अमेंड हुई जो वर्कर्स अदर देन 80-81 का जो लॉ था उसके अंदर केवल वुमेन्स और चिल्ड्रन पे कॉन्सेंट्रेट किया गया था. 1891 के लॉ ने पास करके इवन अडल्ट वर्कर्स को कवर अप किया. देन in 1890, it was this year 1890 when the Bombay, this is very important, Bombay and Mill Association was formed. This was under the leadership of N.M. Lokhande, who is called as father of labor movement in India. Yeah. His presidency, the Bombay Hands Mill Association was formed. This is also actually called as starting point of labor movement in India. Yeah, starting point of labor movement in India. Up N.M. Lokhande, the purpose of forming this Bombay Hand Mills Association was to bring into the notice the evils of factories, or you can say the drawbacks of 80-81 Factories Act, bring grievances of textile workers. So cotton textile workers के grievances को सामने लाने के लिए और 80-81 एक्ट को अमेंड करने के लिए ये फॉर्म किया गया था एसोसिएशन. जनरल आपको याद रखना है, देयर वाज इन जनरल व्हिच वाज गिवन बाय दिस बॉम्बे हैंड्स मिल्स एसोसिएशन. दिस जनरल वाज दीन बंधु. एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं दीन बंधु. ठीक है. इज दिस क्लियर? देन नेक्स्ट फेज was 1892 when Royal Commission on Labor was set up. अब ये जो रॉयल कमीशन ऑन लेबर एक्चुअली इंडिया में 1929 में बना था. कब? 1929 में स्टडी करने के लिए इंडिया में रॉयल कमीशन अंडर द लीडरशिप ऑफ व्हाइटले कमीशन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाइटले कमीशन, उनके अंडर में आया था. But this was to study the condition all over the world. So 1892 में the Royal Commission was set up and it studied the condition of the labor all over the world. This commission actually worked for improving reducing the working hours and improving the working condition. ठीक है. तो ये 1929 से रिलेट नहीं करना, ये सेपरेट था 1892 के अंदर में. Then यहाँ तक क्लियर? एवरीवन हैव अंडरस्टूड? चलो क्विकली लेट मी नो इफ यू हैव अंडरस्टूड अप टू हियर. नाउ 1897 there was the formation of Amalgamated Society of Railway. अब मैं इसका आपको बैकग्राउंड बताऊंगी. रेलवे सर्विस. This was, I will write down the few points, then I will explain you. Founded in India in 1897 and was influenced by Amalgamated Society of Railway Servants of UK, which was formed in
1872 by Michael H.E.L. Thomas. ठीक है, अब क्या हुआ, दिस वॉज अमेलगमेटेड 1897 में। जो रेलवे सर्वेंट्स थे, मीन्स रेलवे डिपार्टमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले लोग अलग अलग प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, दे वेर फेसिंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स, so they formed the amalgamated society and they came together as an organization. This was in 1897, but ये किससे influence हुए थे? They were influenced by amalgamated society which were formed in UK by Michael Thomas. तो वहां से influence होके यहाँ की भी रेलवे डिपार्टमेंट के लोगों ने अपनी amalgamated society बनाई, ठीक है। Then इसके बाद क्या हुआ, I will write it down. The next 1905 के अंदर में there was the printer union. Calcutta was formed. In Calcutta was formed 1907. the Bombay, इनके बस आपको नाम याद रखने हैं, years, that's it. Bombay Postal Union in Calcutta and Madras. Then 1908, this was beginning of political consciousness among the Indian movement or Indian labor movement. So beginning of political consciousness. Of Indian working class. इसमें क्या हुआ था, that there was a massive strike. There happened a massive strike. The strike was against the imprisonment of Bal Gangadhar Tilak. Swadeshi movement started, boycott movement started, a movement started against the partition of Bengal, which shows that the now Indian working class became politically conscious. So that was 1908. Then came your 1900 and so sorry. Up 1909. This was when the Kamgar Hit Vardhak Sabha was formed. This was under the leadership of S.K. Bole. Again, this was not a formal trade union. The main purpose of this was to welfare of the working class. Okay. Then 1911, the Social Service League was framed under the leadership of N.M. Joshi. The purpose of this was to study the social facts, to study the social status of the workers or the employees in the India. So this was the phase before 1918. यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होता है प्री 1918. तो if you have noticed, it was just an labor movement. There was no trade union. क्या था, केवल और केवल लेबर मूवमेंट था, कोई भी ट्रेड यूनियन फॉर्म नहीं हुई थी. And you can notice there was no workers who actually came into the forward. वो अपने आप सामने नहीं आए थे. It was the philanthropist, it was the social worker who actually started and came forward, right? So this is the first stage. Next all these stages we are going to do in our next classes. I hope you have understood. These are the different year. I will let you know. हम एक साथ sequence में भी पढ़ेंगे and you would by heart the evolution of trade union, right? So this was the session for the day. We started with 1851, cotton mill was formed, and we ended with 1911. By heart it, revise it again and again, and you would be able to complete it, right? Fine. So this was the session for the day. हम इसके बाद का कल के सेशन में करेंगे. Tomorrow morning also we are having the session. Yeah. Fine. So thank you. Give your feedback after the session, and we would be meeting in our